Assalamualaikum. My name is Kashaf Muhammad and I have done my bachelor's from NUML Islamabad in BA Psychology. I have been teaching since around 2 years to both university students, college students, as well as students from all around the world, online, in person, everything. Okay, today I am going to discuss the topic that is Golem effect with respect to the teaching perspective. Um, Before starting, I'm going to clear that I'm going to use both English as well as Urdu in order to make you better understand this concept. Okay, getting into the topic, Golem effect. First, we talk about a little background of it. Actually, the Golem was a sculpture that was made in around 20th century in the Jewish era, where a sculpture has been made and it was thought to be destructive and toxic in the future. Now, after when some time has passed by, the sculpture turned out to be destructive and toxic. Okay, leaving this behind, in around 1982, this concept that your negative expectations affect the behavior of the people in the future or in front of you. When Rosenthal and another researcher start researching on this topic, they like see the resemblance between the column, the sculpture, and this effect. Then they name this effect as Golem. Okay, coming toward this effect, what it is, we are going to explain it by breaking down into three pieces. Firstly, there is a negative expectations. जब हम ये बात कहते हैं कि we expect negative from the other people, their behavior started turning negative. Golem effect क्या होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पे पूरा होता रहता है. व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी? इट इज द कंफर्मेशन दैट यू आर गिविंग टू द पीपल कि जो आप सोच रहे हो वो ठीक है और मैं इसी तरह से बिहेव करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घरों में होते हैं, the kid from whom the parents don't expect much, they say that you are not a good kid, you got in the bed, you not like accomplish good things, big things. So that kid started turning into what the parents is expecting him or her to be. इवन दो वो बच्चा ऐसा नहीं होता, वो बच्चा बहुत डिफरेंट है, बट क्योंकि उसको पता है कि व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, so he is just doing self-fulfilling prophecy. He is fulfilling the expectation that people are having from him. If we talk about it in a teaching perspective, the negativity or the negative thoughts, the negative behavior you have towards your student, the student will start turning into something that you are expecting him to be. ठीक है? And in a negative sense, not in a positive sense. Then the second thing is your impact on behavior. कि जब आप किसी के बारे में एक नेगेटिव थॉट रखोगे तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, मेरे बारे में अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है, मैं उस इंडिविजुअल से अच्छी तरह से नहीं मिलूँगी, मैं उसके साथ इंटरेक्शन रिड्यूस कर दूँगी, मैं उसकी सुनूँगी नहीं. ठीक है. The third thing is students' performance. When your student is not interacting with you, when your student thinks you are thinking negative about him, his performance will decline as he will not gonna study in your class. ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी क्लास में, वो नहीं बैठेगा आपकी क्लास में. That is how it deteriorates, and that is how the Golem effect influence the teaching, influence how you are impacting a child when you are teaching a child. ठीक हो गया? If we talk about the psychology behind it, the first thing is your cognitive biases. Your cognition is your mental processing. आपके confirmation biases reinforces initial negative beliefs. कि आपका जो confirmation bias है ये reinforce करता है आपके negative beliefs को towards your student. ठीक है, आपकी cognition, आपके mental processing में ये चीज़ मौजूद है ऑलरेडी कि आपने अगर अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लाइक स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है. नाउ व्हेन यू गो इनटू द क्लास, व्हेन यू एंटर द क्लास, तो आप उन स्टूडेंट के साथ इसी तरह से बिहेव करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू बी सो हैप्पी जॉली विद द स्टूडेंट्स हु आर बिलो एवरेज और एवरेज, बिकॉज दैट इज़ योर कॉग्निशन. दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है रिड्यूस इंटरेक्शन. टीचर्स जो होते हैं वो जब किसी स्टूडेंट्स
के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते, या दे थिंक दैट दे आर नॉट गुड इनफ, अच्छे बच्चे नहीं हैं वो, तो वो क्या करते हैं, उनके साथ अपने इंटरेक्शंस को बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं, rather than the students who are like well equipped with the subject। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या आता है, इसमें स्टूडेंट्स के रिस्पांस क्या आता है कि स्टूडेंट्स से जब एक्सपेक्टेशन ही कम रखी जा रही है तो स्टूडेंट्स की जो मोटिवेशन होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जब उनकी मोटिवेशन डिक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, एंड दैट परफॉर्मेंस विल अफेक्ट योर ग्रोथ इन द फ्यूचर। Then we will talk about the subtle ways that every teacher uses in his classroom, in his or her classroom. First of all, when you don't make an eye contact with every student that is sitting in the class, okay, जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता, you will not make eye contact with those people, or you will not try to like indulge or interact with those people. तो जब टीचर unconsciously consciously ऐसे बच्चों के साथ that he or she doesn't like और he or she thinks that is not good in the studies, तो वो क्या करते हैं, उनके साथ अपना आई कॉन्टैक्ट रिड्यूस करते चले जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आप आंसर का जो टाइम है वो डिक्रीज़ कर देते हो। आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज़ माई थाट, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी सोच, मेरा अपना मसला है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप इस आंसर का जवाब नहीं दे पाओगे, तो मैं क्या करती हूँ, आपको 2 सेकेंड दे रही हूँ, जवाब दो। नहीं आता आपको तो मैं नेक्स्ट पर्सन से मूव कर जाऊँगी और मैं आपको कहूँगी तुमने तो याद ही नहीं किया, यू डोंट हैव लर्न दिस, यू आर नॉट गुड। ठीक है, रादर देन द स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है, जो एस करता है अपने सब्जेक्ट में, मैं उसको क्या कहूँगी, मैं उससे जब कोई क्वेश्चन पूछूँगी एंड ही इज़ टेकिंग टाइम, तो मैं उसको टाइम दूँगी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसको आता है। थर्ड चीज़ आ जाती है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। आप कम से कम अपॉर्चुनिटीज़ उस बच्चे को दे रहे हो इन ऑर्डर टू स्पीक, इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद यू, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन द क्लास। आप डिटेल्ड फीडबैक नहीं देते हो। अगर उस बच्चे ने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो यू वुड नॉट से कि बेटे इस टाइम पे जो है वो आपने 3 लाइन्स लिखी हैं, इट्स ओके, इट्स अ गुड एफर्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने जो है वो और अच्छा लिखना है, यू कैन डू इट। रादर देन सेइंग दिस यू वुड से 3 लाइन, ये भी याद नहीं हुआ, लाइक व्हाट अ हेल ऑफ अ किड यू आर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास फिफ्थ चीज़ आ जाते हैं कि आप ऐसे टास्क हम ऐसे बच्चों को देते हैं जो बिलो एवरेज आते हैं, एवरेज में आते हैं, आप उनको लेस चैलेंजिंग टास्क देते हो, आप उन्हें ऐसे चांस नहीं देते हो, ऐसे चैलेंजिंग टास्क नहीं देते हो जो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करें। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कहते हो, आप उनको पढ़ाते हुए आप लेस इंथुजियास्टिक होते हो, इंकरेजमेंट आप उनको लेस दे रहे हो, आपकी टोन है वो ऑटोमेटिकली ढीली पड़ जाती है with the students who are not good in your thought or in your thinking matter, for your expectation they are not good, so आप अपनी energies को उनके सामने लेकर ही नहीं आते हो। अब हमारे पास जो educators हैं, how they have to cope with it, या वो किस तरह से इस चीज़ को prevent कर सकते हैं। तो first of all आ जाता है आपका self reflection। आपका कहीं भी जाने से पहले यू हैव टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट योर थॉट्स आर, कोई भी प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों है, किस तरह से है, कहीं भी जाने से पहले, whether you are going to teach, whether you are going to study, whether you are going to work in an office setting, whether you are going to speak with your parents, whether you are going out with your friends, always have a self reflection। ठीक है, in 2025 we are already living in a toxic, in a very bad society, जहाँ पे हम बोलने से पहले नहीं सोचते हैं कि our words have an impact on the person who is listening। तो for the betterment of the society, for the betterment of your own self, for your own mental health, I would say start thinking before you're speaking, start doing a self reflection। अगर मेरी सुबह मेरी चाय ठंडी हो गई है तो इसमें मेरा कसूर है, बाहर वाले का कसूर नहीं है कि मैं जाके उस पर अपना गुस्सा निकालूंगी बिकॉज आई डोंट हैव माई टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपके पास आ जाती है पॉजिटिव एफर्मेशन। जब भी आप किसी के साथ बात करें, अपने स्टूडेंट्स से बात करें, तो एक पॉजिटिव रहें, अपनी कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखें, डोंट बी टू नेगेटिव अबाउट समथिंग दैट ही और शी कैन नॉट अकम्प्लिश और वट एवर द रीज़न इज। Third is equitable opportunities. Give him the tasks that are challenging but easy to accomplish. बच्चों को ऐसे टास्क मत दें जो बहुत मुश्किल है, जो आपसे शायद खुद भी ना हो, लेकिन आप बच्चे को दे रहे हैं बिकॉज यू आर फॉस्टरिंग द ग्रोथ। डोंट डू दैट। फोकस ऑन द ग्रोथ, यू हैव टू फोकस ऑन द ग्रोथ। आप जो भी टास्क देते हो, आप जब उन्हें दे रहे हो तो अपने जहन में सोचें कि आइदर आई एम गोइंग टू help in their growth or either I am deteriorating the growth that they have already given।
The next is Pygmalion effect. Okay, now here there is Golem effect and the opposite of Pygmalion effect. Pygmalion effect है, अगर हम थोड़ा सा background में जाएं, so there was a person named Pygmalion and he made a sculpture. He made a sculpture of a woman. ठीक है, अब क्या था कि he was not marrying for a long time because according to him उसे कोई अच्छा नहीं लगता था, उसे कोई औरत अच्छी नहीं लगती. He doesn't like women. तो उसने क्या किया, एक स्कल्पचर बनाया एंड वो स्कल्पचर उसके मुताबिक था. ठीक है, आजकल भी ऐसा होता है ना कि फॉर लाइक मैरिज प्रपोजल्स इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट यू नीड अ परफेक्ट पर्सन. उसकी आइज ऐसी होनी चाहिए, नोज ऐसी होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, बॉडी टाइप ऐसी होनी चाहिए, बॉडी बिल्डर है नहीं है, लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट. दैट पर्सन हैज़ द सेम थॉट कि इस बंदे में उसे जो भी लड़की नजर आती थी वो कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल देता था. अब उसने एक स्कल्पचर था, उसने एक स्कल्पचर बनाया, एक औरत का स्कल्पचर बनाया एंड ही प्रे टू द गॉड ऑफ लव कि उसके अंदर वो जान डाल दे. फॉर अ टाइम में बिकॉज ही फेल इन लव विद दैट स्कल्पचर, ही फेल इन लव विद द वुमन दैट इट वाज हिज स्कल्पचर. तो गॉड ऑफ लव ने उसके अंदर जान डाल दी एंड दैट बिकम अ पॉजिटिव चेंज बिकॉज ही थॉट पॉजिटिव अबाउट इट और उसके अंदर जो है वो जान आ गई. सो यू फेल इन लव विद इट एंड ऑल दीज आर द स्टोरीज दैट आर द बैकग्राउंड. ठीक है, अब 1962 और 60s there was a social psychologist, two social psychologists who worked on the concept कि आपके ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है. तो क्या हुआ था कि उन्होंने जब ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया पिग्मेलियन इफेक्ट. और पिग्मेलियन इफेक्ट इज कि व्हेन यू थिंक पॉजिटिव अबाउट अ पर्सन, व्हेन यू एक्सपेक्ट पॉजिटिव फ्रॉम अ पर्सन, ही विल स्टार्ट बिहेविंग पॉजिटिव. जब आप किसी से नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव उसके एक्सपेक्टेशन रखोगे तो नेगेटिव बोलेगा, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव बोलेगा. दीज आर द टू कॉन्सेप्ट दैट यू कैन ऐड इनटू योर टीचिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट. Now coming towards the conclusion and winding it up, we have to be aware of our surroundings, our expectations. We have to be conscious कि हम किसको किस तरह से perceive करें, नेगेटिवली करें, पॉजिटिवली करें और उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है. Then strategies, if you are going negative, you have to make your strategies through which you have to grow. आपने इससे निकलना है, आपने देखना है कि आप इसको मिटिगेट किस तरह से कर सकते हैं. And the last thing is your growth. कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके स्टूडेंट्स ग्रो करेंगे, जितना आप नेगेटिव रहेंगे उतना आपके स्टूडेंट्स नेगेटिविटी में जाएंगे. दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट वाज गोलेम इफेक्ट. I'm ending this topic here. Hope you understand this topic and I would suggest to be positive, to choose positive language because I said it before and I'm just gonna say it again. Be positive, be kind to the people around you because you never know what they are going through and your problems are not the responsibility of other people to deal with. Be happy, be kind and stay healthy. Thank you. Allah Hafiz.